हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। नाउ वी नो A vector cross B vector, that will give us AB sin theta and one n cap. Now the question arises, why this n cap? So this n cap will signify direction. Basically we'll get AB sin theta, but it is vector, so we need direction, so that is we add n cap to it. So now few points to remember. Note first, A vector cross B vector is always perpendicular to the plane containing it. A vector cross B vector is always perpendicular to the plane containing it. That is containing A vector and B vector. जो plane हमारा, let's say this is, let's say this is a plane and we have over here we have A cap and B cap. A vector and B vector. So A vector cross B vector is always perpendicular to the plane containing A vector and B vector. कि जो भी इसका प्रोडक्ट बनेगा ये हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगा. नेक्स्ट, A vector cross B vector, that is the product, is always perpendicular to A vector as well as B वेक्टर. ये जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो A वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और B वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट वो उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा. बट द थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. A vector and B vector is always perpendicular to A vector as well as B vector, but A vector and B vector may or may not be perpendicular to each other. जो प्रोडक्ट है वो दोनों A वेक्टर और B वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि A वेक्टर और B वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर हो. इट्स नॉट पॉसिबल. आई एम सॉरी. Note number 4. A vector cross B vector and the dot product of this product with A vector. Similarly, A vector cross B vector and the dot product with B vector. And both of this is equal to 0. Why? A vector cross B vector का dot product A vector और B vector के साथ, why is it 0? Because we have seen it in the earlier points, A vector and B vector are perpendicular to A vector as well as B vector.
सो ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और यूनिट वेक्टर्स में हमने पढ़ा है दैट इज अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो उनके बीच 1 cos 90 that is the angle and cos 90 is 0. So this will be 0. The reason we can write is a vector cross b vector is always perpendicular to a vector and b vector, hence their dot product is 0. इधर एक बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता है अगर दो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स है दैट इज आई कैप एंड जे कैप, तो वो cos 90 होता है एंड दैट इज द प्रोडक्ट इज 0. बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आई कैप इंटू जे कैप लेट्स से दैट इज not equal to 0, that is equal to 1. It's just the vice versa. Cross product में 1 होता है and in dot product we have 0 because they are mutually perpendicular to each other. Now next, now in case of cross product, a vector cross b vector is equal to c vector. Let me explain. Let's say we have a triangle over here. Let's mark I cap, j cap and k cap. Now अगर हम आई कैप और जे कैप का क्रॉस करें दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर, आवर आंसर विल बी पॉजिटिव. अगर हम जे कैप और के कैप को मल्टीप्लाई करें दैट इज फ्रॉम जे टू के, दैट विल बी पॉजिटिव. और अगर हम के और आई को मल्टीप्लाई करें दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर, the answer will again be positive. But अगर हम k वेक्टर को j वेक्टर से मल्टीप्लाई करें that is from here to here, I'm sorry this will be positive. अगर हम j वेक्टर को k वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, अगर हम j कैप को k कैप से मल्टीप्लाई करें so the answer will be in positive form. और अगर हम k कैप को j कैप से मल्टीप्लाई करें that is from here to here, the answer will be negative. Similarly अगर हम j कैप को i कैप से करें that is from here to here, the answer will be negative. और अगर हम i कैप को j कैप से करें that is from here to here, the answer will again be negative. Let me explain. That is अगर हम i कैप और j कैप का क्रॉस ले रहे हैं दैट इज i और j, so that will be equal to k cap. Can you see this is in this format? a vector cross b vector is equal to c vector. दो वेक्टर का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक तीसरा वेक्टर देता है दैट इज i कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू k कैप. क्या ये इस फॉर्म में है? यस. बट हमने i को j से किया दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर, ये ब्लू लाइन दैट इज पॉजिटिव. बट अगर हम j कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करें दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज द ग्रीन लाइन, सो द आंसर विल बी माइनस k कैप. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. दैट इज अगर हम इधर से इधर आए दैट इज फ्रॉम i टू j, the third vector that is the k vector will be positive. but अगर हम j vector से i vector की तरफ जाएं that will be minus of k vector. and that dot product में ऐसा कुछ नहीं था.
in dot product I vector I cap dot j cap was equal to 0 and I cap dot I cap was equal to 1, because इसमें एक सिंपल सा फंडा था I and J they are mutually perpendicular, that is cos 90 and cos 90 is equal to 0 and I and I दोनों एक लाइन में है, that is cos 0 and cos 0 is equal to 1, but क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है. देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. दो वेक्टर्स का क्रॉस एक तीसरा वेक्टर देता है एंड दैट इज ऑल्सो साइन सेंसिटिव. नाउ Now we'll talk about derivation excuse me, derivation of a vector cross b vector. ऐसे ही हमने डॉट के लिए भी किया था, ऐसे ही हम क्रॉस के लिए भी करेंगे, but the method is different. Sorry, but the method is different. Now, we know the general vector form of A vector and B vector, that is AX I cap plus AY J cap plus AZ K cap, and this is B vector, that is BX I cap plus BY J cap plus BZ K cap. Now we are required to find A vector cross B vector. So to find A vector cross B vector, we use a method called the determinant method. This is called the determinant method. Now let's take I cap, J cap and K cap. अब हमें देखना है A और B के बीच में I cap, J cap और K cap में क्या क्या है. So we know I cap में we have AX A vector के लिए और B vector के लिए we have BX, J में we have AY BY and K में we have AZ BZ. Now this derivation is very simple. There's just a simple trick. हमें आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करना है, but the sign which we'll follow is positive, negative, positive. जो हमारा पहला मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करेंगे उसमें हम पॉजिटिव साइन रखेंगे, सेकेंड जो हम परफॉर्म करेंगे उसमें नेगेटिव एंड थर्ड में पॉजिटिव. लेट मी एक्सप्लेन. लेट्स से फर्स्ट वील फाइंड आई कैप. सबसे पहले हमें आई कैप फाइंड आउट करना है. सो कैसे करेंगे हम? डिटर्मिनेंट मेथड स्टेट्स कि अगर हमें आई कैप फाइंड करना है so we'll hide the corresponding row and the corresponding column. हमें जो फाइंड करना है उसके corresponding जो रो होगा और जो कॉलम होगा हम उसे हाइड करेंगे. we'll hide this and this. so you can see we are left with this AY AZ BY BZ. so हमें इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है and that will be the value of I cap. so let's do that. हमारा ये पहला है आई कैप, सो वील कीप द साइन एज पॉजिटिव. सो वी हैव AY वी हैव AY और हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ऑब्वियस. AY BZ माइनस
AZ BY, दिस इज I कैप। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उन दोनों के बीच में हमेशा नेगेटिव साइन रहेगा। ये जो पॉजिटिव साइन है वो I J और K के बीच में, ये जो I के बीच में जो हम लोग चारों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ये हमारा पहला वाला पॉजिटिव था, नाउ वी हैव नेगेटिव। अब हमें जे कैप फाइंड करना है। सो अगेन जे कैप के लिए हम जे के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे। सो वील हाइड दिस एंड वील हाइड दिस। वी हैव हिडन द करस्पॉन्डिंग रो एंड द करस्पॉन्डिंग कॉलम। सो हमारे पास बचा ये ax bx एंड दिस az bz। हमें इन चारों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड बीच में एज यूजुअल नेगेटिव साइन रहेगा, दैट इज ax bz माइनस az bx। अब k कैप, सो we'll take the positive sign this time, माइनस प्लस माइनस। सो अब हमें k कैप फाइंड करना है। सो अगेन हम k कैप के करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को हाइड कर देंगे। सो वी आर लेफ्ट विद दिस ax ay bx by। excuse me। so we'll multiply this 4, we have ax by minus bx ay। so this is our derivation of a vector cross b vector, ay bz minus az by for I cap, this is j cap and this is k cap। next एक नोट पॉइंट बताना चाहूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइंड इट ये डॉट है, एक जस्ट नॉलेज के लिए, दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब क्या मतलब इसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर हम आगे पीछे करेंगे वो इक्वल रहेगा। Why? What is the reason? Because dot product gives a scalar quantity। हमारा जो, अगर हम दो वेक्टर्स के आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे so that will give a scalar quantity and all of us know स्केलर क्वांटिटी के पास अपना मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। सो दोनों बी वेक्टर और ए वेक्टर के पास अपना अपना मैग्नीट्यूड है, सो दैट डजंट मैटर हम इसे आगे लिखें या पीछे लिखें, डायरेक्शन इज अनसिग्निफाइड। अब वी हैव ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दैट विल नेवर बी इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। व्हाई? Because cross product gives a vector quantity। इसका जो भी आंसर रिजल्टेंट होगा दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इज ओके, हम आगे लिखें या पीछे लिखें, बट अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख देंगे तो ये जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगा एंड हेंस द आंसर विल बी इनकरेक्ट। सो हेंस हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते हैं बिकॉज डायरेक्शन विल चेंज। नाउ Now let's take up geometrical
interpretation of क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? फर्स्ट, इट गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, it gives area of triangle। कैसे? How does this geometrical interpretation of cross product state that दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा? I'll explain. A vector cross B vector is equal to AB sin theta. All of us know. Now let's take this. Let's say we have this A vector and this B vector. Let this be theta, and if we join using a diagonal method, let this be x, and we'll extend this and make it out in a parallelogram. अब क्या ये एक पैरेललोग्राम है? यस। क्या हमारे पास A वेक्टर और B वेक्टर है? यस। क्या हम क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकते हैं? यस। कैसे? A हमारे पास है, B हमारे पास है, वी आर लेफ्ट विद साइन थीटा। नाउ हम साइन थीटा लेते हैं A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर हमारे पास है x and hypotenuse we have B. So can we write x is equal to B sin theta? Now, what is the area of parallelogram? Area of parallelogram, that is equal to base into height. Base we have A, we'll just take the magnitude A multiplied by h, height. What is this? Is perpendicular by hypotenuse. Now what is h over here? That is the hypotenuse. Base into height, that is the hypotenuse. So hypotenuse we have x, and we have the value of x, that is B sin theta. So that is equal to AB sin theta, and hence we can say cross product gives area of parallelogram. Similarly, let's say we are to find out area of triangle. That is nothing but half multiplied by base multiplied by height. That is A multiplied by B sin theta upon 2. So we can write it as AB sin theta upon 2 signifies the area of triangle. Mind it, AB sin theta हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा, एंड AB sin theta by 2 will give area of parallelogram. दोनों ही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस है, it's just that triangle में we have to divide it by 2. So let's take one question.
in the following figure, find number of AO vectors. Let me draw the diagram. We have A, B, C, D. We have a center at O and we have diagonals connecting. Okay. Now, we are given AB vector plus AC vector plus AD vector is equal to how many AO vectors? This is the question. AB vector plus AC vector plus AD vector is equal to how many AO vectors? So, this AB vector, can we write it as AO vector plus OB vector? This is AO plus OB. That is for AB. And for AC, can we write AO plus OC? AO plus OC. And for AD, can we write AO and OD? That is AO vector plus OD vector. Now we can see this AO and OC both are in the same direction, and diagonally that means both sides are equal. So can we write OC equal to OA? Both are in the same direction. ये भी इस direction में है and ये भी इस direction में है. So can we write it as AO vector? This ये AO भी इधर से इधर की direction में है and this OC is also in the same direction. So we can definitely write OC vector as AO vector. And this OD vector, we can see OD vector is in this direction. And this OB vector is in this direction. That is, the directions are opposite. So can we write it as negative of OB vector? OD vector is negative of OB vector. That's so obvious. Now, this OB and this negative OB will cancel out each other. We are left with 4 AOs. That is 1, 2, 3 and 4. So we have our answer, that is AB vector plus AC vector plus AD vector is equal to 4 AO vector. Now, let's take one more question. So, this is our last question for the day. The question says, if A vector plus B vector is equal to C vector. This is our first information. Magnitude of B vector is equal to twice the magnitude of A vector. This is our second information. The resultant vector, that is C vector, this is C vector, is perpendicular to A vector. That is the third information. Find out the angle between A vector and B vector. So, if this is our A vector and this is our B vector, this will be a resultant vector. But no, this will not be a resultant vector. This is no rule. हम इसे किसी भी तरह नहीं join कर सकते हैं. We have to use a rule. So,
using tip to tail मेथड। हम डेफिनेटली इसे टेल टू टेल मेथड से भी कर सकते हैं, बट रैंडमली हम किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन नहीं कर सकते। सो दिस विल बी आवर ए वेक्टर एंड this will be our b vector, that is tip to tail। a वेक्टर के टिप से हमने b वेक्टर के टेल को ज्वाइन किया है। सो दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट डायग्राम एंड द r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर, that is the c vector। this is perpendicular to a vector, this is the c vector। so the first, all the three conditions are satisfied, that means this is the absolutely correct diagram। now we'll just substitute the values। we are given magnitude of b vector, we'll just take the magnitudes। magnitude of b vector is equal to twice the magnitude of a vector। find out the angle between a vector and b vector। so इधर हमारे पास this we have base and the hypotenuse, this c is unknown, that is the resultant vector। तो हमारे पास base है and hypotenuse है। so we'll take cos theta definitely, that is equal to base upon hypotenuse, and in place of base we have a, just we'll take the magnitude, and in place of hypotenuse we have b, that is equal to twice of a, that is 2a। a and a will cancel out, we are left with half, and now cos theta is equal to 1 by 2, that signifies theta is equal to 60 degree। we know the value of cos 60 degree, that is 1 by 2। so here we have cos theta is equal to 1 upon 2, so we are left with theta is equal to 60 degrees। so that's all for today, hope you like the video, thanks for watching।